हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ बाय कोट स्किन्ने। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल ऑफ द स्टोरी, रेन ऑन द रूफ बाय कोट स्किन्ने। लेट अस सी द थीम ऑफ द स्टोरी. The theme of the poem is healing power of rain. The musical sound of raindrops falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and arouse fancies in an otherwise busy mind. The rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. तो इसका थीम में ये बताया गया है कि हीलिंग पावर ऑफ रेन बताया गया है। और जो रेन जो है वो म्यूज़िकल साउंड जो बजाती है वो अपने रेन ड्रॉप से, वो बहुत अच्छा लगता है पोएट को। द रेन thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. Let us see the introduction. This poem tells us about the poet's sweet memory of his childhood. जब पोएट छोटा था तब उसके मेमोरी के बारे में बता रहा है ये पोएम. At night when a dark clouds cover the sky. जब काले बादल जो होते हैं वो आसमान को पूरा कवर कर लेते थे रात के समय, तो वो धीरे धीरे रेन होता था. और फिर जो पोएट है वो अपने बेड को कोजी बेड बोलता है और वहाँ पे रेन की आवाज़ सुनते सुनते सोता था अपने उसके कॉटेज पे रेन ड्रॉप्स गिरते थे और वो उसको सुनता था, उसको अच्छा लगता था. द पोएट रिमेंबर्स द लविंग लुक ऑफ हिज मदर who used to shower love and affection on her children. उसको अपने मदर की भी याद आती थी कि जो अपने बच्चों को अपना प्यार और अफेक्शन दिखाती थी. चलिए फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं. When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब मीनिंग देखते हैं स्टैंजा का. द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर. ह्यूमिड शैडोज का मतलब है कि जो डार्क क्लाउड्स थे पानी से भरे हुए, तो जब उसमें से पानी गिरता है, तो पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around in the sky over all the starry spheres. यहाँ पे starry spheres का मतलब है जो नाइट में जो स्काई होते थे उसके बारे में बताया गया कि जो स्टार से पूरा भरा रहता था. एट द टाइम huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing raindrops to the tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as it is crying, and the raindrops are the tears shed by it. He adds that it is a able like a blessing to lie on the bed in his room. Cottage chamber means bedroom, and listen to the sound made by the raindrops falling on the roof. यानी इसका यही मतलब है कि जो पोएट है वो आराम से अपने बेड पे लेटता है और रेनड्रॉप्स की आवाज़ सुनता है, स्टार्स जो होती हैं स्काई में वो सब देखता है, और जो रेनड्रॉप्स के साउंड है वो उसके रूफ पे गिरते हैं, उसको वो अच्छा लगता है. अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start.
and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब इसका मीनिंग देखते हैं. The poet when is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart, and in his dreams he has many different fanciful imagination. He adds that this sound of the rain falling on the roof top creates many new different dreams in his mind. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of dreams. तो जब पोएट जो है वो अपनी फीलिंग्स को बताता है कि जब वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनता है तो उसको अपने पास्ट याद आ जाती है, अपनी ड्रीम्स याद आ जाती हैं जो वो चाइल्डहुड में होती थी उसकी ड्रीम्स. और जब वो रेन की आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर कई सारी नई ड्रीम्स भी आती थी और उसके जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो भी रिकलेक्ट होती थी ड्रीम्स के फॉर्म में. इन द थर्ड स्टैंजा नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उसकी मेमोरी में उसको उसकी मदर याद आती हैं. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. अरे शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Meaning देखते हैं इसका. Here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. It is the memory of his mother, who is no longer alive. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him asleep till daybreak and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. The sound of the rain makes him correlate his past with his present. That is why the poet is moved by the sound the raindrops on the shingles of the room. Whenever he hears his sound, it brings back memories of the past and he reminds of his mother. तो वही मेमोरीज़ कलेक्ट करते करते पोएट को अपनी मदर भी याद आ जाती हैं और इसी में वो इंक्लूड कर दिया कि जब वो अपने मेमोरीज़ को पिछले मेमोरीज़ को याद करता था तो फिर उसको अपनी मदर ज़रूर याद आती थी कि कैसे उसकी मदर जो थी उसका केयर करती थी. तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको चैप्टर समझ आया तो आप कमेंट में बताइएगा. अगर मेरे से कुछ गलती या फिर अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको असाइनमेंट्स चाहिए, इस चैप्टर की भी असाइनमेंट है, अगर आपको चाहिए या फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफ़र कर सकते हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस नाइट. हैव अ नाइस इवनिंग. थैंक यू.